Yeah, it is live. Good morning, everyone. Today we are going to discuss about budget 2024, so that has been presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on 23rd July. So I'm aware that everyone is watching television, everyone is listening lots of YouTube channel, so you have the lots of the awareness. In spite of that, today we are going to discuss about very minutely thing. Reason is that he, Finance Minister Nirmala Sitharaman has given the speech of the only 1 hour, around 1 hour and 20 minutes. But budget page is around 4 to 500. Whether it is possible to read each and every word of the 4 and 500 words in 1 hour, it is not possible. It means whatever she has given uh, on the floor of parliament, that was the only summary. And what will be the rule regulation and what is the meaning of that particular thing? So that has to yet to come, and it will take around 7 to 10 days. And after 7 to 10 days, we are able to understand what is the really in budget. But whatever she has told, so today we are going to discuss about budget. Before starting budget, just I'm going to disclaimer one thing. I'm here to present each and every clause of the budget as being the tax expert, not as the political expert. Nobody can say why it is given to the one particular state or XYZ. So we are not going to discuss about the politically. We are here to discuss about the economics and taxation. One thing. Another thing, as I have already told to you, lots of the notification, rule, regulation yet to come. So there are lots of the confusion that uh, that will Finance Ministry will provide all circular detail within the 10 days. Okay. Yeah. So today we are going to discuss about it. Budget is prepared for the taxpayer, budget is prepared for the business owners, and budget is prepared for the country. Country means what is the development is going on. Suppose that agriculture, suppose that port, suppose that road. So how much budget in education, in hospital industry? Okay. So how much amount is allocated to develop road, to develop port, to develop railway, and to make educate youth, and how much amount has to uh, provide in the education as well as the hospital industry. Okay, for the you can say health for health sector. So there are the lots of the things. So today we are going to take the perspective of the taxpayer as well as the business owner. Today we are not going to discuss about the country because that is the very vast thing, and as being the you and me general person, that is not relevant. Suppose that they have given the lots of the uh, welfare scheme for the women and uh, agriculture. So it's very difficult because you and me is not agriculturist, and that scheme is not relevant. Yeah, that is relevant for the someone. So we are going to discuss about the taxpayer as well as the business owner. So sorry. So budget is you can say it is the annual chart where government of India is providing on record in the last year what we have earned, where our money has gone, and what is the my roadmap for the next year, and how I will collect taxes, how I will generate revenue for the next year. So country as well as every expenditure of the country will be uh, remain constant, or you can say that will be fulfilled from the revenue of country. If revenue of any country is very less and expenditure is high, then what will happen? We have to take loan from outside, that you can say the outside India, World Bank, and some other developed country. Okay, so budget is the whole and sole key how country make the taxation on the common person. Common person, it means through direct tax, through indirect tax, so that the government of India will get the revenue. Before starting the budget discussion, I will
I would like to say what is the direct tax, what is the indirect tax. Indirect tax is the name, right now it is the name the GST goods and service taxes, and direct tax is the income tax. Direct tax means whatever the income, whatever the money you are receiving, government is saying, okay, you have earned around 10 lakh rupees, please pay me the 10%, 20% or 30%, that will depend what is your status. Suppose that you are a company, then and you are earning 10 lakh rupees profit, then it is a 25%. If you are individual and you have chosen new tax regime, then after 3 lakhs, there is no taxation. 3 to 7, 6 lakh rupees, it is the 5%. 6 to 9, it is the 10%, and 9 to 12, it is the 15%. So it is the basket rate where you have to follow. Suppose that you have chosen old scheme, then there is no taxation. 2.5, 2.5 to 5, it is the 5%, and above 5 lakh rupees, between 10 lakh rupees, it is the 20, and above it is the 30%. So that is the revenue circulation through the direct tax as well as the indirect tax. So suppose that you are doing the business and you have a partnership firm, and if you are getting the any salary from your partnership firm, so till this budget there was no TDS. Suppose that I'm the partner in any partnership firm and I'm getting the salary of the 20,000 per month, 50,000 per month, even 1 lakh rupees per month, but there was no TDS. But in case of companies, I'm the employee for any company like 50,000, 60,000, 70,000, 1 lakh rupees per month, then company has to deduct TDS, and I'm the professionally involved with any company. Okay, that particular company, that company is paying to me. They have to pay TDS. They have to deduct TDS before releasing my payment. That was the 10%. So this provision has been imposed in budget. If you are the partner in any partnership firm and you are getting the salary, so salary till time it was decided last finalization of the balance sheet, and there was no TDS. But now it is the purpose. If you are the partner and a partnership firm, so you are getting the salary, then TDS will be deducted at the rate of the 10%. Now, if your total salary is the more than 20,000, then it is the 10%. Now we are going to discuss about the individual taxation, ATC, ATD, home loan, capital gain, and tax limit. तो यहाँ पर finance minister Nirmala Sitharaman has given the mixture. Like there is in some section there is the increase, there is the decrease, and there is no change. So overall in the ATC, ATD, home loan, capital gain, tax limit, it is the mixture explanation. So today we are going to discuss about कि कहाँ she has given the benefit, she has given the relaxation, she has taking the more taxes. So each and every thing we will discuss. First of all, हम डिस्कस करेंगे कि where we are making some investment in insurance, in PPF or children education, where in ATC we are getting a round deduction of the 1,50,000. That include PPF, TPF, that include LSS insurance, some FD that related to 5 to 6 years, children education. Now there is no change. But it means कि जो अभी तक आपको 1,50,000 का डिडक्शन मिलता था and you have opted old regime, again you are eligible only 1,50,000. There is no change. ऐसा we are expecting ये जो 1.5 लाख से कम 2 या 2.5 लाख हो जाए या 3 लाख भी हो जाए, 3 नहीं तो 250 हो ही जाए, ठीक है. लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई चेंज नहीं किया है. क्यों नहीं किया, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है. जस्ट आई एम गिविंग कि देयर इज नो चेंज इन एटीसी. जहां पर पहले 1,50,000 का बेनिफिट मिलता था, अगेन राइट नाउ भी ये अभी आपको 1,50,000 का ही बेनिफिट मिल रहा है. तो देयर इज नो चेंज इन एटीसी. होम लोन, when you have taken any you have purchased any house, so for purchasing house you have to take home loan. So in when you have to pay EMI,
So in home loan, you have to pay two parts. One is the interest, another part is the principal amount. The principal amount is again considered in between ATC. That include PPF, EPF, ELSS, insurance, FD, children education, as well as the principal amount of home loan. And that limit is the 1,50,000 and there is no change. But that EMI consisting the interest, that interest amounted to 2 lakh rupees is eligible for the taxpayer. Okay, and that is the allowed only on the old tax regime. So in old tax regime, it is around 2 lakh rupees. Now there is no change. इट मीन्स कि जो जितना पहले था उतना ही बेनिफिट मिलता है. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई वुड लाइक टू कंफर्म टू यू कि जो 2 लाख है, सपोज दैट यू आर पेइंग द होम लोन and your total interest is 1,40,000 rupees. Your total interest is the 140. So whether you are eligible for taking deduction of the 2 lakh rupees interest? No. अगर आपका टोटल इंटरेस्ट इज लेस देन 2 लाख रुपीज, देन यू आर एलिजिबल ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट. और योर इंटरेस्ट इज एक्सीडिंग 2 lakh rupees, then you are eligible for maximum 2 lakh rupees. It means interest paid by you or 2 lakh, whichever is lower. Suppose that I have taken loan of the 50 lakh rupees or 20 years ka I have taken EMI. What will happen? My EMI will be around 48,000 to 50,000. So for simple calculation, I am taking my EMI is around 50,000. In a whole year, how much amount I have repaid? 50 multiplied 12, it's come around 6 lakh rupees. So 6 lakh rupees में on average interest cost would be 3 lakhs, 3 lakhs 50,000, 3 lakh 25,000 on average. It means if my total interest is more than 2 lakh rupees, so what will be the amount eligible? That will be the I can claim. If it is the self-occupied, then I can claim maximum 2 lakh rupees. If it is the let out, suppose that I have purchased the house property and I have given on rent and I am paying the interest around 3 lakh 25,000 and I am getting the rent around 30,000 rupees per month. Then my total rental will be 360. Then I am eligible to get the whole amount, whatever the paid at the home loan, that is the 3 lakh 25,000. So that is applicable only for the let out property, but any property is kept for the own residence, self-occupied. कि भैया ये तो मेरे पास रहेगा. In that scenario, it is only 2 lakh rupees, and 2 lakh is the maximum limit. Amount paid, interest paid, or 2 lakh, whichever is lower. One thing. One more thing I would like to clear to you. Sometimes we are not able to pay EMI. Suppose that कि मैंने 9 EMI पे किया और 9 EMI से total interest is coming 10,000 rupees per month. On average, my interest cost would be around 90,000. और last के 3 EMI I have not paid, but that has been the accrued. Okay, मेरे ऊपर ड्यू हुआ, but that I don't have the money, तो वो डिजॉनर कर गया, डिफॉल्ट कर गया. तो in a whole year, how much interest I had? 1,20,000. So now there is the three situation. Now maximum limit is the 2 lakh rupees. My interest due is 1,20,000, but I have actual made payment of the 90,000. So I would like to understand if you are aware, is this scenario आपको डिडक्शन 90 का मिलेगा, 120 का मिलेगा या 2 लाख का मिलेगा. तो any participant has any awareness, any knowledge? What I had told to you कि 9 EMI मैंने दिया, टोटल EMI was around 15,000, तो 10,000 का मेरा इंटरेस्ट था, तो 9 EMI दिया, तो I have paid 90,000 as a interest. लास्ट का 3 EMI has been bounced. और उस पर जो अगर मैं दे देता तो 1,30,000 और हो जाता, तो माई टोटल इंटरेस्ट ड्यू होता है 1,20,000, बट आई हैव पेड ओनली 90,000. व्हाट विल बी द डिडक्शन फॉर मी? 90,000, 1,20,000 और 2 lakh. So any participant has any awareness, any knowledge, any confirmation, so please tell me. Okay. So in this case, income tax department is saying
कि टोटल इंटरेस्ट ड्यू ऑन यू वेदर यू हैव पेड और नॉट पेड डजंट मैटर। इट मींस कि जो मैंने 3 EMI नहीं भी पे किया था, आई एम एलिजिबल टू टेक द डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट जो हमें सेक्शन 24B में जो हम हाउसिंग इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी से लेते हैं, इनकम फ्रॉम हाउसिंग हेड से लेते हैं, वहां पर व्हेन आई हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट पेड, तो मैं 90,000 नहीं लेके 1,20,000 का लूंगा। चाहे उसमें 30,000 रुपया मैंने पे भले ही नहीं किया हो, लेकिन मुझे बेनिफिट 1,20,000 का मिलेगा। तो ये आपको एक समझने की चीज है, और ये चीज आज नहीं आया है, दैट वाज द एप्लीकेबल बहुत पहले से है। जिस दिन से ये इंटरेस्ट ऑन द हाउस प्रॉपर्टी आया है, ये एप्लीकेबल उसी दिन से है। तो इन दिस बजट देयर इज नो चेंज। जो आपको 2 लाख का पहले से बेनिफिट मिलता था, वही बेनिफिट आज भी मिल रहा है। एंड वी हैव ऑप्टेड द न्यू टैक्स रिजीम। आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड होम, लेकिन आप ओल्ड रिजीम में रहते हो तो आपको 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। टैक्स लिमिट, अगर हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम का, देयर इज नो चेंजेस एज आई हैव टोल्ड इन द बिगिनिंग कि इफ वी हैव ऑप्टेड ओल्ड टैक्स रिजीम देन देयर इज नो टैक्सेशन टिल 2,50,000, 2,50,000 to 5 lakh it is the 5%, 5 lakh to 10 it is the 20%, and above 10 lakh rupees it is the 30%. So there is no change in the tax rate. There is no change in the tax limit. Like if government has increased from basic exemption from 2,50,000 to 3,50,000, then I can say that there is some changes in the tax limit, but there is no changes. Now we have to understand the new tax regime, because right now lots of the young taxpayer is choosing new regime. Reason is that it is attractive and there is no force to make any investment. So without making any investment, you are getting the more amount. Your tax is getting the less. It means you are eligible to get the more amount in your hand. So everyone in the today's scenario is choosing new tax regime. So, and if you have chosen the new tax regime, so this budget, Nirmala Sitharaman has given the benefit of that 17,500 if your total income is exceeding 15 lakh rupees. But now we will see how it is the beneficial, whether it is the 17,500 rupees benefit for the every salary everyone, or it is the benefit only for the salary class, or it is the benefit or also for business class. So that we will discuss. So how it is the calculation of the benefit of the 17,500, that we have to understand. First of all, Finance Minister Nirmala Sitharaman has increased a standard deduction from 50,000 to 75,000. So it means she is giving the additional standard deduction of 25,000 to salary class. So and your total income is the more than 50 lakh rupees, so your tax slab will be 30%. Then your maximum benefit will be 25,000 multiplied 30, it is the 7,500. Now, in the new tax regime, Government of India, or you can say the Finance Minister, has changed the tax slab also. Till before this budget, it was the till up to 3 lakh there is no taxation, there is nil. 3 to 6 lakh it is the 5%. 6 to 9 it is the 10%, 9 to 12 it is the 15%, 12 to 15 it is the 20%, above 15 it is the 20%. It means they had the slab of the 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs, 5, 10, 15, 20, 20 के बाद 25 का देर बाद तो no scope, तो सीधे 30 था. Now, Finance Minister Nirmala Sitharaman has increased that thing. कि 3 lakhs there is no changes, 3 basic है. जो 3 to 6 था, they have changed 3 to 7 कर दिया है. ओके, फिर 7 to 10 कर दिया है, और 10 to 12 और 12 to 15 और above 15 अगेन 30%. तो इन्होंने कहने को तो आई एम प्रोवाइडिंग द लॉट्स ऑफ द बेनिफिट, लेकिन रियलिटी में देयर इज नो सच एज द बेनिफिट. रीजन, आपने 15 लाख का लिमिट नहीं बढ़ाया, आपने
इसके बाद सीधे 30 था कर दिया, पहले भी 20 के बाद 30 था, दैट यू हैव कीप, आपने 25 का कोई ऑप्शन नहीं रखा। नाउ हाउ इट इज द कैलकुलेशन ऑफ द 70,500, 25,000 का जो मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया, इफ योर इनकम इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, देन इट इज द 7,500 का हुआ। देन जो पहले था 3 to 6, नाउ सी हैज इंक्रीज 3 to 7, तो जो 6 to 7 का 1% हुआ, दैट इज द बास्केट रेट ऑफ द 5%। तो 1 लाख का 5% कितना था, 5,000। एंड पहले 9 to 12 इट वाज द अराउंड 10, 9 to 12 कितना था, 10%। नाउ इट इज द now it is the 9 to 12 था, it was the 15%, now it is the 10 to 12 हो गया है आपका 15%, मतलब कि 9 to 10 10% के बास्केट में आ गया। तो 15 और 10 का 5% का बेनिफिट मिल गया, अगेन 1% का वेरिएशन और 5% का बेनिफिट, तो 5,000 ये। तो इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 15 लाख से ज्यादा, 16, 17, 18, तो इन टोटल 17,500 का बेनिफिट मिलेगा। नाउ इट इज government is saying कि we are providing the 17,500 benefit to the taxpayer। पहला चीज ये बताओ, if anyone income is the more than 15 lakh rupees, 16, 17, 17 लाख के इनकम में 17,000 बेनिफिट दे रहे, तो it means it is the 1%। then what is the benefit? मेरे साथ there is no such as the benefit। again you have to calculate monthly basis पर 17,500 डिवाइडेड बाय 12 करते हो, तो महीने का 13-1400 भी नहीं आता। 13-1400 तो मैं तो कहता हूँ किसी का कन्वेंस नहीं होगा। इट मीन कि नो वन इज एबल टू गो ऑफिस टू होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस भी जाने का कन्वेंस कम से कम 5 से 7,000 8,000 रुपया पेट्रोल आता है। आप व्हाट यू आर गिविंग द बेनिफिट, 1200-1400 पर मंथ। गवर्नमेंट इज क्लेमिंग वी हैव गिवन द लॉट्स ऑफ द बेनिफिट, देन इट इज अ रिडिकुलस थिंग। कम से कम आपको बेनिफिट देना था तो 5 से 10,000 पर मंथ देते, अदरवाइज नहीं देते। और सपोज दैट माय इनकम इज अराउंड 7 to 8 लाख रुपीस, तो मेरे को तो मोटा मोटी कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो एज द गवर्नमेंट इज क्लेमिंग, जो कॉर्पोरेट में या एड में दिखाया जाता है कि मैक्सिमम चीज को दिखाया जाता है कि ये पेस्ट लगाओ तो आपका दांत सही हो जाएगा, या ये क्रीम लगाओ तो आप गोरे हो जाओगे। लेकिन जो शॉपकीपर है या जो होलसेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है खुद काला हो, लेकिन वो लगा के अभी तक गोरा नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक को गोरा करने के लिए दे आर इंटरेस्टेड। अगेन दैट इज द सेम थिंग, गवर्नमेंट इज सेइंग कि वी आर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ द 17,500, बट इसके लिए जो 15 लाख से ज्यादा कमाता है, अगेन इट इज द 1%। इफ वी हैव डिवाइडेड इनटू द 12 मंथ, देन देयर इज नथिंग, 1200, 1300, 1400, जो एक तरीके से नथिंग। ओके, तो दैट इज द वन थिंग, वन चेंज इन द taxation that I have the कि 12,500 का तो 1458 रुपया का बेनिफिट। आप 1458 रुपया से आप सोच लो, आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आपको बहुत सारे खर्चे करने हैं, क्या करने हैं आप अपना डिसाइड कर लो। और मोदी जी को थैंक यू बोल दो कि थैंक यू सर, मैंने आपको थर्ड टाइम लाया और आपने हमें 1,500 रुपया का पर मंथ का बेनिफिट दिया है, दैट वी हैव। नाउ कैपिटल गेन, तो यहाँ पर इफ गवर्नमेंट इज गिविंग द सम बेनिफिट टू यू, तो कैपिटल गेन में उस बेनिफिट को अल्टीमेटली रिकवर कर लिया गया है। यू एंड मी वी हैव द सम कैपिटल गेन, लाइक वी हैव द सम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, some of them we have the investment in the equity, and agar anybody is saying I don't have the mutual fund, I don't have the share equity, but sometimes we have the हाउस प्रॉपर्टी जो कभी ना कभी आप सोल्ड आउट करते हो या परचेज करते हो, तो वहां पर भी कैपिटल गेन को ऊपर नीचे किया गया है, तो दैट वी विल डिस्कस। देयर इज द वन बेनिफिट कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जाम्पशन जो 1 लाख का था, दैट हैज बीन इंक्रीज 1.25 लाख का कर दिया गया है। इट मींस कि जो पहले आपको 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन मिलता था, 1,25,000 का हो गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, suppose that I am making the investment in equity, I am making the investment in mutual fund, and I have sold within the 12 month। जैसे आज मैंने परचेज किया 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो 12 महीने के बिफोर आई हैव सोल्ड आउट, चाहे वो लॉस में करूँ या प्रॉफिट में करूँ। इफ इट इज द प्रॉफिट, देन आज से पहले 15% का टैक्सेशन लगता था, नाउ इट इज द 20%। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो टैक्सेशन है 23 जुलाई से ही अप्लीकेबल हो गया है। इट मीन
कि बजट वाले दिन से ही अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो उस पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। and long term को has been increased 10 to 12.5%, कि जो पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड और इक्विटी पर 10% का देते थे उसको 12.5% कर दिया गया है। तो ये दैट्स वाई मैंने शुरू में ही बोला था कि इट इज द मिक्सचर, कि कुछ कम किया गया है, कुछ को इंक्रीज किया गया है। नाउ यू आर सेइंग कि long term capital gain exemption has been increased from 1 lakh to 1,25,000, but again they have the यहाँ पर there is the some relief, but they have taken the relief back कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन रेट बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन रेट बढ़ा दिया, but there is the one relief कि जहां पर when you have sold your gold, when you have sold your house property, when you have sold your long term land, जहां पर टैक्सेशन 20% लगता था, नाउ इट इज 12.5%। मतलब अब आप कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेचते हो, चाहे वो फ्लैट हो, गोल्ड हो, एनीथिंग, एवरीथिंग इज टैक्स एट द रेट ऑफ द 12.5%। एवरीथिंग इज द टैक्स एट द 12। तो एक जगह 20 से रिड्यूस करके 12.5 कर दिया गया है, कुछ चीजों में 10 से बढ़ा के 12.5 कर दिया, 15 से बढ़ा के 20 कर दिया गया है। So if you are getting the some confusion for the long term capital gain, so at the end of the session you can ask any question. If you are making the some investment in equity market, तो जहां पर there is the some imposed ड्यूटी लाइक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसको भी 0.01% से उसको इंक्रीज करके 0.02% कर दिया गया है। इट मीन्स कि आप जब आप शेयर परचेज करोगे तो वहां पर आपको गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और आपको प्रॉफिट पर भी ज्यादा टैक्स देना है। तो व्हाट यू हैव टू डू कि पहले अब मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि बिफोर बजट, दिस बजट 23 जुलाई से पहले यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट और आपने 100 रुपए का कोई शेयर परचेज किया and you have the decided to earn 10% profit margin। तो 10 प्रॉफिट मार्जिन के लिए आप 112 में बेचते थे तो 12% का मार्जिन हुआ, 12 रुपया के ऊपर 20% टैक्स लग जाता था। तो 12 रुपया के ऊपर 20% टैक्स लग जाता था, तो अराउंड 2 रुपीज, 12 रुपये का 20% हो गया 1 रुपया 20 पैसा। तो 112 माइनस 1 रुपया 20 पैसा और कुछ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, तो नेट अल्टीमेटली आपके हाथ में 110 रुपया पड़ता था, जो दैट इज योर नेट इनकम। दैट यू कैन से कि मैंने एक शेयर बेच के 10% नेट कमाया। नाउ शॉर्ट टर्म भी इंक्रीज कर दिया गया, सिक्योरिटी टैक्स भी इंक्रीज, तो नाउ यू हैव टू क्रिएट कि जो आपने 112 का टारगेट लेकर चले थे कि मैं कम से कम 12% के प्रॉफिट पर बेचूंगा, अब आपको ये 14% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा इफ यू वांट टू रिटेन सेम प्रॉफिट। कि जो इस बजट से भी पहले इफ यू आर लुकिंग कि आई वांट टू अर्न द सेम काइंड ऑफ द प्रॉफिट लाइक द 10%, तो आप यू हैव टू इंक्रीज योर टारगेट कि अब मुझे 12 की जगह पर 114 पर बेचना है। या विनय जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। यस, सो सर इसमें अगर ऐसा है कि मान लीजिए मैंने एक शेयर में प्रॉफिट कमाया और मैंने उसको री इन्वेस्ट कर दिया उस प्रॉफिट को, तो भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा? Definitely. In case of the equity share, in case of the mutual fund, there is no such as the relief. There is no such as the relief कि आप एक को बेच के दूसरे में परचेज कर लेते हो, तो इसका कोई रिलीफ का नहीं है। एक रिलीफ होता है, था, अभी भी है कि इफ यू हैव द लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल इक्विटी शेयर एंड यू हैव परचेज द फ्लैट, यू हैव परचेज द रियल एस्टेट, देन देयर इज द सम रिलीफ। अदरवाइज शेयर टू शेयर परचेज करने से देयर इज नो रिलीफ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो अब मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि एवरीवन, जैसे मैंने भी आपको बताया कि नाउ कैपिटल गेन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 12%, 15 to 20%। तो इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि इफ आई एम मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड आई एम अर्निंग प्रॉफिट, तो ठीक है, थोड़ा सा 5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले भी लेती है तो इट्स ओके। मैं अपना टारगेट ही आगे चलाऊंगा, मैं ऐसे शेयर को पिक करूंगा जहां पर ज्यादा प्रॉफिट दे, या जो मैं 8-10% बेनिफिट लेके जाता था मैं 9% लेके जाऊंगा। तो ऐसा कोई हाई तौबा वाला चीज नहीं है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से कि जॉब में तो हम सुबह 10 से रात के 8 बजे तक, मतलब वी आर गिविंग द 8 to 9 hours 10 hours, बट इन केस ऑफ द स्टॉक मार्केट, इन केस ऑफ द म्यूचुअल फंड,
हम पूरे साल भर में भी अगर 10-20 घंटा दे दे, इफ वी आर डूइंग द सम प्रोफेशन, वी आर डूइंग द सम जॉब, दैट इज द एनफ। बट मोस्टली व्हाट वी डू, कहीं यूट्यूब पर देख लिया, किसी टीवी पर देख लिया, किसी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया, या थोड़ा बहुत हम रिसर्च कर लेते हैं। तो इट मीन व्हाट आई वांट टू से, पूरे साल भर में आप 1 से 2 दिन 3 दिन शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड को देते हो, और यू आर गेटिंग द लॉट ऑफ द प्रॉफिट, तो उस पर 10, 15 से 20 भी हो जाता है, देन इट इज नॉट सो मारा मारी। जहां पर हम सुबह से शाम टाइम देते हैं, उस पर तो गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दे रहा है। तो शेयर मार्केट में बढ़ा भी देता है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, मतलब बहुत ज्यादा कष्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने कम टाइम दिया तो थोड़ा सा गवर्नमेंट भी ले ले। तो दैट इज माय पर्सपेक्टिव। आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर, बट दैट इज द माय व्यू। And one more thing I would like to say, just 1 second. Just 1 second. या अब जो मैंने आपको बताया कि पहले आपकी यू हैड द वन हाउस प्रॉपर्टी, एंड 23 जुलाई से पहले अगर आप बेचते थे, देन लॉन्ग टर्म था, देन यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन एज वेल एज उस पर 20% टैक्स लगता था। नाउ ये टैक्सेशन भी 20 से हैज बीन रिड्यूस टू 12.5% ही हो गया, और इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया गया है। इंडेक्सेशन खत्म करने का सीधा सीधी मतलब आपको बता देता हूँ कि suppose that you have the purchase any house property in 2000 in 1 lakh rupees, and today you are selling in the 1 crore। तो इंडेक्सेशन खत्म करने का मतलब हो गया कि आज आपका कैपिटल गेन कितना होगा, 1 करोड़ माइनस 1 लाख रुपीज, 99 लाख रुपीज योर कैपिटल गेन। पहले इंडेक्सेशन में क्या होता था, इंडेक्सेशन इज जस्ट लाइक द इन्फ्लेशन, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज गिवन द वन टेबल कि तो प्राइस 100 रुपए का 2000 में था, उसका कुछ ना 110 रुपया 2001 में हो जाएगा, ऐसे कर करके आज 3.68 हो गया था। मतलब कि जो 100 रुपए का चीज 2000 में था, आज 3.5 गुना बढ़ चुका है। तो सपोज दैट माई कॉस्टिंग वाज 1 लाख रुपीज इन 2000, इंडेक्सेशन आज के डेट पर करता तो 368 से मल्टीप्लाई करना होता, तो इट मीन कि 1 लाख का चीज मेरे को मिलता, इंडेक्सेशन के बाद होता 3,68,000, तो माई टोटल कैपिटल गेन वुड बी 1 करोड़ माइनस 368। तो ये जो 96 लाख का हुआ, 96 के ऊपर अब मुझे 20% पहले टैक्स देना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती नो, अब 1 करोड़ माइनस 1 लाख रुपया कर दो, इसके ऊपर 12.5% कर दो। तो इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ये जो 20% था उसको रिड्यूस करके 12.5% किया है। और मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है, जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। मोस्टली केस में आपको और हमको बेनिफिट ही होगा, कुछ केस में कुछ लोगों को लॉस हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन just give me the 5 minutes, let me share the explanation example with you। Suppose that my sale consideration is 5 lakh, ये चेंज नहीं हुआ, just one, just 1 second sir। हाँ, this is that I have given the explanation of the shares। My sale consideration is the 5 lakh rupees and cost was the 3,50,000। So I had the capital gain of the 1,50,000। So what I have to pay capital gain before 15% से 22,500। अब how much I have to pay is 30,000। It means कि now in the short term capital gain मुझे 7,500 रुपया का ज्यादा पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर यही मेरा को 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था तो 15,000, अब 12.5% के कारण मेरे को 18,500, मतलब कि 3,750 का मुझे एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। Yeah, now I am taking the example of the real estate। Suppose that right now you have sold in the 1 CR, और आपने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया था 10 लाख में इन द ईयर ऑफ द 2000। तो इफ वी आर एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन, तो 10 लाख का 3.68% आपको कर देना, क्योंकि जो 100 रुपए का चीज था इन 2000, नाउ इट इज द प्राइस 368 एज पर द इंडेक्सेशन एज पर द इनकम टैक्स। ओके, इट मीन्स की किसी भी चीज का प्राइस 3.68 से होना था। द इंडेक्सेशन प्राइस
23-24 में, इससे पहले वाले साल में 348 था, करंट ईयर में 368 है, तो मैं 348 लास्ट ईयर वाला ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज देखना था, सेल कंसिडरेशन 1 CR, मेरा कॉस्ट लेस कॉस्ट विद इंडेक्सेशन 34,80,000 हो गया, 34,80,000। टोटल माय कैपिटल गेन वुड बी अराउंड 65 लाख रुपीज 0.2। तो पहले मुझे कितना टैक्स लगता है, 60.2 मल्टीप्लाई 20%, तो 13,40,000 के अप्रॉक्स में मेरे को टैक्स लगना था। बट इन द न्यू टैक्स रिजीम मेरे को कितना कैपिटल गेन होगा, 1 CR माइनस 10, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन। तो वट एवर आई हैड द कॉस्ट वही सिर्फ माइनस होगा, तो 90 लाख। तो 90 लाख के ऊपर 90 लाख रुपीज आई हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ द 0.25%. So my taxation, my capital gain would be around 11.25 lakh rupees. It means यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, आई एम गेटिंग द बेनिफिट। के ओल्ड टैक्स रिजीम में आई हैड टू पे एट द रेट ऑफ द 20%, बट इन द न्यू टैक्स रिजीम इट इज वी आर गेटिंग द 1.25 12.25%, so I am getting the benefit around 2 lakh rupees. That it is showing the calculation. And I'm taking the same example with same amount, but I'm considering कि I have purchased that property in 14-15. That property I have not purchased in the 2001, 2000 or 2001. I'm purchasing. I have the purchase property in the 14. Then यहाँ पर what is the indexation? Indexation for the 14-15 it is the 240, and 23-24 it is the 348. So now we will see whether I'm beneficial in the new tax regime or not. Long-term capital gain, how I will be able to calculate? Sale consideration 1 CR, indexation 14.5 लाख आ जाएगा, क्योंकि 240 डिवाइडेड बाय 348 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इतना आ जाएगा। कैपिटल गेन वुड बी 85.5। ओल्ड में मेरे को हाउ मच आई हैव टू पे, 17.1 लाख का मुझे पे करना था, क्योंकि 85.5 मल्टीप्लाई 20%। बट इन केस ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम माय कैपिटल गेन वुड बी 10, माय कॉस्टिंग 1 CR माइनस 10 इट इज 90 को मैं 12.5 से करता हूं, तो अगेन माय कैपिटल गेन वुड बी 11.25। तो यहाँ पर मेरे को अप्रॉक्स 5.85 का बेनिफिट हो रहा है। देयर इज सम केसेस जहां पर लॉस भी हो रहा है इन केस ऑफ द due to the removal of the indexation, but that is the very rare cases. Mostly cases में we are going to take benefit of the removal of the indexation. अगर ये indexation remove कर दिया जाता और there is no reduction of the tax rate, तब तो पब्लिक को लॉस होता, बट पब्लिक को ये बेनिफिट हो रहा है। रीजन इज दैट indexation has been removed, but taxation is also down, so it is the beneficial for the each and every Indian citizen. एक दो केसेस हैं, let me try to discuss with you that particular case. If my sale consideration 1 CR, my costing 25 lakh rupees in 2000, so again my indexation 348 or 100, तो यहाँ पर what would be there, 25 मल्टीप्लाई 348 करूंगा तो माय इंडेक्सेशन कॉस्ट विल बी 87 लाख रुपीस। कैपिटल गेन 13 लाख, 13 के ऊपर मेरे को आई हैव टू पे द टैक्सेशन 2.6 लाख रुपीस। बट इन द न्यू टैक्स रिजीम आई हैव टू पे 1 करोड़ माइनस 25, 75 के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है 9.3 लाख रुपीस। तो मेरे को यहाँ पर लॉस हो रहा है अप्रॉक्स 7 लाख रुपीस का। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमेशा वी आर नॉट एबल टू गेट द फ्रूट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ को। तो मेरा जो मानना है, मोटा मोटी अगर 10 आदमी आज के बाद कैपिटल गेन करेगा तो उसको 8 आदमी को बेनिफिट होगा, 2 आदमी को लॉस होगा। तो जब भी कोई रूल आता है तो किसी ना किसी को प्रॉफिट या लॉस तो होता ही है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन related to capital gain, now I would like to say it is the end of my session. So if you have any question related to budget, related to taxation, related to long term, short term, anything you can ask. सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, कैन आई आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल? किसी और ने भी अनम्यूट किया था। Yeah, sure, you can ask. Savanand ji, can you stop live? हाँ, so okay,